I guess I'm visible to you. Oh, thank you. Hello. Walaikum salam. Better, Willis. Yes, better. Oh, hello. Am I audible? Perfect. Walaikum assalam, Sheikh Mohammed Saad. Hope you'll be doing good. Sure, it's fine. Walaikum assalam, Chaudhry Tahir from Punjab Literary Society. Okay, so hello everyone. Hope you'll be doing good. As this is live session on YouTube, so many other people will going to join us later on, and I believe that I'm audible and there are no other sounds.
if there is any distortion, so you may kindly let me know through the chats. So proceeding with the first thing is that is introducing myself. My name is Mohammed Ahsan, and I'm a practicing lawyer. It's been 3 years that I'm practicing, and I'm a high court lawyer. I also achieved a gold medal in my studies uh, in my BS Law Bachelor's from Edwards College, Peshawar. So it's been 3 years that I've been working in this sector, especially my main focus is on litigation, intellectual property, and fintech. So today we are going to talk about the intellectual property as well as fintech. Basic focus will be on the intellectual property as fintech is developing field. So still we will going to talk about that as well. So starting with intellectual property. So first of all, we need to know that what intellectual property basically is. अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि what intellect means, intellect is the your ability of the mind, ठीक है. So intellectual property is every that property which has been created by your mind. अब intellectual properties को नाम ही इस वजह से दिया जाता है because it is the intellect, and that intellect you are showing in your work that you have created something. फिर उसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिवाइड किया गया है डिफरेंट टाइप्स में, which we call as the different types of intellectual property, which includes trademark, copyrights, patents, trade secrets, and there are other types, but those are not applicable in Pakistan, so we are not going to talk about those. Although trade secret is also not that much applicable, we only have these three types, which are practically uh, being used and being registered in Pakistan. So we are going to talk about these three. I'm also going to talk about the trade secret as well. So proceeding with the first kind of intellectual property, that is trademark. Trademark is one of that intellectual property that is commonly used. A trademark में होता क्या है? Trademark is the thing that when you want to give yourself a mark, जिस तरह उसमें से लिखा गया trademark. When you are trading something, when you are selling out services, or when you are selling out products, and you want to do this thing कि आप अपने आप को एक mark देना चाहते हैं, you want to give yourself a specific, a distinctive mark so that people should know कि who you are. Just we have these food chains like KFC, McDonald's, and many other like Tim Hortons. Like these are the food chains which are working globally, and they have been given their own names. Then we have the brands of clothing brands like we have Next, we have Primark, we have Polo. So these are the brands which are already been working. These brands are already working. अब इन brands के लिए why we need a trademark? अब trademark की ज़रूरत हमें इस वजह से पेश आती है so that no one can copy what I'm doing, because if I have started something, then there should be no copies without my permission. Now, what happens in a trademark is that when you register your trademark, those trademarks say it gives you rights as to the use of a specific mark or a logo along with the name. A trademark includes two things. It should be a logo and as well as a name. Like I have my own firm under the name of AK Legal Associates. I have my distinctive mark. So what I'm going to do that कि मैं अपना नाम, that is AK Legal Associates, along with that specific mark, I'm going to trademark it so that in Pakistan no one can use that. Up the trademark ordinance as is uh, applicable in Pakistan, that gives you rights. On rights के तहत what you can do is that once the trademark is registered in your own name, that no other person in the whole of the Pakistan can use your trademark. Now here you cannot sell your trademark. ये एक चीज, एक डिफरेंस है जो कि कॉपीराइट और पेटेंट्स में आता है. जो कॉपीराइट्स और पेटेंट्स को सेल आउट किया जा सकता है, लेकिन द ट्रेडमार्क कैन नॉट बी सोल्ड आउट. इट इज योर डिस्टिंक्टिव मार्क that distincts you, yeah, that gives you that specific, you could say, a specific mark across Pakistan, so that people should know that under the name AK Legal Associates, there is an advocate of the High Court who is working, yeah, who is running a law firm, who is providing different kinds of services. I want to do that to मैं कर सकूं. Apart from that, many other businesses जो कि companies होती हैं, they must go for a trademark.
trademark is important for them because trademarks say they can make sure that the product they are bringing in the market is not copied, is not being used by any other person illegally. For example, we have Tapal tea. Uh, the brand name is Tapal. The brand name is Tapal. तो Tapal में क्या होता है कि no one other person या no other company can copy the name Tapal. You can sell out the tea or any other product. If you talk about any other product, so that's a healthy competition. वो हमारे पास एक competition commission भी है that provides and that supports a healthy competition. लेकिन no one can copy that brand Tapal. Similarly, no one can copy the shirt brand Polo. Similarly, no one can copy the other clothing brand like Next or Primark. What happens in the trademark is further, I need to elaborate that okay, it gives you the rights. You can even go for proceedings against any other person if someone is using your trademark illegally. अब फर्स्ट वी विल मूव विद द एप्लीकेबल प्रोसेस कि एक ट्रेडमार्क को पाकिस्तान में किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज. अच्छा, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने का तरीका पाकिस्तान में ये है दैट वी हैव IPO, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. Intellectual property organization of Pakistan have its offices in three major cities. That's four major cities. That's in Islamabad, Peshawar, Lahore, and Karachi. Karachi is their main head from where all the trademarks comes. अब क्या होता है कि first we have to file a TM1 form. A TM1 form is downloadable from the IPO website. What you have to do is that you must show your distinctive mark, your name, and the person who is holding that. Now, there is this one important thing that there are certain trademarks which can be directly put on a proposal for being registered without needing any other kind of authority over that. For example, if I talk about my firm, so first I have to register my firm in Bar Council and then I can go for the trademark. I need that specific Bar Council certificate that my firm is registered and then I go for the trademark. But there are other products like Polo is a product. They usually register a company and after the company registration, they go for that trademark. But there is no necessity that you register a company under the similar name. No. अगर आपने एक कंपनी में रजिस्टर की है तो आप उसके लिए कोई 10, 15, 20 देयर इज नो लिमिट टू दैट. आप कोई सी भी ट्रेडमार्क्स उस पर लगा सकते हैं, आप उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं. एक कंपनी 10 ब्रांड्स भी निकाल सकती है और उसके लिए डिफरेंट ट्रेडमार्क्स चल सकती है. सो द एप्लीकेशन प्रोसेस दैट यू हैव टू फाइल अ TM1 फॉर्म along with your distinct logo and your name, and afterwards you file that form in any of the offices, whether it can be Peshawar, Karachi, Lahore, Islamabad, and from there on the TM1 form is registered. You are given an acknowledgement number. उस acknowledgement number का मकसद होता है so that you can उस acknowledgement number का मकसद ये होता है so that you can further communicate the overall process. अच्छा, पाकिस्तान में जो प्रोसेस का टाइम है वो है तकरीबन 2 years. एक ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए आपको 2 साल का वक्त लगता है. अब इसमें होता क्या है, एप्लीकेबिलिटी एक एप्लीकेशन जो प्रोसेस होते हैं मैं आपको बता देता हूँ so that it's easy for you to navigate through it. First of all, you file the TM1 form along with the relevant fee and the जो भी उसके relevant documents होते हैं, TM1 form and the authority letters. Along with that, you file the डिमांड ड्राफ्ट या अगर आप उसको डायरेक्टली पेमेंट करते हैं IPO की जो अपनी एक रिक्वायर्ड फी है. देन आपको एक एक्नॉलेजमेंट इशू होती है विद इन अ मंथ. आफ्टर द एक्नॉलेजमेंट दे सी वेदर द ट्रेडमार्क हैज एनी ऑब्जेक्शंस और नॉट. उस ऑब्जेक्शंस को करने का तरीका ये होता है कि इट इज़ फर्स्ट इसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है जहाँ पर इसको चेक किया जाता है बाय द ARs, द एडिशनल रजिस्ट्रार्स ऑफ द ट्रेडमार्क. अगर तो इसके इक्वली या इसी नेम के और भी ट्रेडमार्क्स मौजूद हैं विच कैन क्रिएट कंफ्यूजन, तो आप पर ऑब्जेक्शन लगाई जाती है. और इसके अलावा भी देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस विच कैन बी पुट ऑन यू. लेकिन वो ऑब्जेक्शंस डिपेंड करती हैं, कहीं पर आपके एक लोगों में इशू आ सकता है, कहीं पर आपके एक नाम में इशू आ सकता है. तो उसके मुताबिक आप पर एक ऑब्जेक्शन भेजा जाता है. उस ऑब्जेक्शन को भेजने के बाद व्हाट दे डू इज दे आस्क फॉर अ रिप्लाई.
तो आपने वो रिप्लाई जमा कराना होता है विद इन 1 month ऑफ द ऑब्जेक्शन। जब आप रिप्लाई जमा कराते हैं देन दोज रिप्लाईज आर पुट ऑन द फाइल, जिसको हम कहते हैं पुट अप करना, एंड आफ्टर दैट इज पुट अप, फिर वो उसको दोबारा से एक प्रोसेस से एआर के पास गुजारा जाता है, who see whether the reply is acceptable or not. If the reply is acceptable, then they move forward. If it is not, so they call you for a personal hearing. अच्छा, पर्सनल हियरिंग और रिप्लाई से जब बात निकल जाती है देन यू गेट अ डिमांड नोटिस। इस डिमांड नोटिस में यू हैव टू फर्दर गिव द ट्रेडमार्क फी. The one you submitted earlier was a fee for the application process, and the demand notice is the fee that you have to give for the trademark. After the demand notice or the fee has been already paid, then the trademark is registered in their online journal, जो कि IPO का हर महीने एक जर्नल निकलता है जिसको वो लोग एडवर्टाइज करना बोलते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में या उस जर्नल में सारे ट्रेडमार्क की लिस्ट होती है। उस लिस्ट को निकालने का मकसद ये होता है सो दैट एवरीवन शुड नो कि ये ट्रेडमार्क रजिस्टर होने जा रहा है। इफ एनी पर्सन अक्रॉस पाकिस्तान considers that he has the first right to use, मैं आपको इसको ही बताता हूँ that what is meant by first right, right of first use, वो भी मैं आपको बता दूँ। तो he can bring in a claim। अगर ऐसा कोई क्लेम नहीं लगता सो इसके बाद आपको आपका ट्रेडमार्क फॉर्म दे दिया जाता है। द प्रोसेस सीम्स टू बी क्वाइट स्मॉल। Zahir, I will let you know. Okay, I will try. I will try to come closer. Give me a minute. Okay, let me put it like this. I guess I hope that now the voice will be much more clear. अच्छा, so अब इसमें चूंकि प्रोसेस तो यू कैन सी कि इट्स स्मॉल, इतना लेंथी लगता नहीं है, लेकिन एवरीथिंग टेक्स टाइम इन पाकिस्तान, सो इट्स अराउंड 2 years प्रोसेस, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट पाकिस्तान, इन अमेरिका एंड इन यूके। In America, it takes around 3 years to register a trademark, but it's obviously for perpetuity. In Pakistan, the trademark registration time is around 10 years, and after every 10 years, you have to renew. Okay. So what is the fee of trademark? Okay. So overall fee of the trademark, the TM1 form, you have to file 3,000 rupees. And apart from that, when you have to file the demand notice, so it depends upon your trademark. Accordingly, you are given that fee and then you have to submit that fee. So normally this is how it goes. It is a process. You can do it online as well. This is really important for anyone who wants to get into thing, is that there is this availability of filing it online. Like online maybe if you do it through a council, it will be useful for you or for the any other person. If you are a council, obviously you need to learn. Like अगर कोई एक normal person है as a layman, so he needs to file it through a council because there are few technicalities which can be easily removed before even filing, and because the council knows that. So for that purposes, if you want to know about the fee structure, so firstly it is around like 4-5,000 along with the documentation and everything, and then the online apply, and then later on if you get the objection, so there are few other things जिसके लिए फिर आपको फी देनी पड़ती है, वो फिर वर्क के साथ साथ like there are different forms, for example change of. Okay, I will let you know. And a new trademark would be, I will get to the questions afterwards. Just give me some time. Let me complete my intro, and then you can I will answer all of your questions. मैं आपको answer कर देता हूँ. अच्छा, this is all about the trademark and its practicality and how to register it online. First, we can answer this question that what's the difference between IP and trademark? There's no difference between IP and trademark. IP means intellectual property, and trademark is the class of IP. IP में different classes fall करती हैं, और trademark is one of the class of IP. ठीक है, मैंने start में बोला भी है, if this session again goes on to YouTube, so you can again rewatch it and then you can find out that what IP basically is. अच्छा, after trademark, we will move to the copyright. Now, copyright, it is one of the best thing I know in Pakistan, and it's really good. Copyright, तो अगर हम simply explain करें, if we go for a definition, there is no specific definitions for trademark, copyright, patent. You need to know this thing. I have done courses from University of Pennsylvania on intellectual property. So even in the US, there are no specific definitions. You can define IP in your own terms, but there are different hallmarks of every specific kind of IP, जिसके तहत you can understand that in what class it is going to fall. Like for the trademark is the distinct mark and the logo. For copyright means anything of the
creation but artistic creation of your mind. What artistic creation means? Acha, artistic creation where you can easily find out to whom we call artists: the musicians, the painters, the singers, the composers, the producers. Any artistic creation of your lifestyle, any artistic creation which brings something new to the world, then it is called as a कॉपीराइट. अच्छा, कॉपीराइट लॉ क्या है? कॉपीराइट लॉ में ऐसा होता है कि फॉर द sake of argument, I am a writer. ठीक है, I have written a book. Now the thing is that I have written this book. All the rights and all the benefits accrued from this book should come to me. So उसके लिए the government of Pakistan has, the government of Pakistan or the overall world, the copyright law is applicable. Copyright में क्या होता है? Okay, for Sabir, I don't know if anyone else has any problem with the audio. I guess I asked everyone if you people can hear me. Maybe there is some issue with your connection, Farwa. Okay, so copyright. अब कॉपीराइट में आपके पास ये राइट्स होते हैं कि व्हेन यू हैव क्रिएटेड समथिंग, दैट आर्टिस्टिक क्रिएशन, यू हैव द राइट सो दैट व्हेन it is sold out, when it is reproduced, or whatever it is given to the general public, you get the monetary benefits out of it. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव राइटन अ बुक. अब उस बुक को मैं पब्लिश करना चाहता हूँ. अब पब्लिशर मेरे साथ ये नहीं कर सकता कि वो अपने नाम से लिख के उस बुक को पब्लिश करा के वो दुनिया में बांटना शुरू कर दे, क्योंकि कॉपीराइट एग्जिस्ट विद मी. अब कॉपीराइट लॉ के तहत मैं इस पर केस भी कर सकती इफ समवन डू दैट. अबाउट द पायरेटेड बुक्स, अगर हम बहुत एक जनरल एग्जांपल ले लें, हमें पायरेटेड बुक्स मिलती हैं. आई आल्सो हैव अ लॉट ऑफ पायरेटेड बुक्स इन माय शेल्फ. पायरेटेड बुक्स का ये होता है कि इट the benefit does not goes to the original owner. That's why we call it pirated. The pirated movies, the pirated books, the pirated any other artistic creation, जिस तरह हम ओरिजिनल पेंटिंग्स देखते हैं. तो कॉपीराइट में ये इख्तियार होता है कि आप जिसने बनाई है, फॉर एग्जाम्पल द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर. अब हैरी पॉटर की बुक उसने लिखी है, सो एवरीथिंग related to that book, its reproduction, its distribution, and everything, the benefits accruing from that book should go to the ओरिजिनल ऑथर. इसलिए ये कॉपीराइट लॉ बनाया गया है ताकि जो ऑथर है, जो भी द मेन ओनर है एक चीज का, उसको ये उसके सारे बेनिफिट्स दिए जाएं. ओके, अच्छा, कॉपीराइट को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ समथिंग that is not very much applicable in Pakistan, but it is not very much utilized in Pakistan. बहुत कम लोग होते हैं, especially the big producers जो कि अपनी movies बनाते हैं, जो कि books लिखते हैं, they go for the copyright laws. लेकिन there is so much complication in it कि for the sake of argument, if we see the books written by Khalid Hosseini, there are many books, or if we see that Paulo Coelho have written many books. अब वो books हमारे पास पाकिस्तान में पड़ी हुई हैं. Those are all pirated books being downloaded from anywhere, और उसको प्रिंट करा के भेज दिया जाता है. तो इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है. कॉपीराइट को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वंस डिटेक्टेड यू कैन सीरियसली गो फॉर दैट एंड यू कैन इजीली डू इट. अच्छा, आफ्टर कॉपीराइट वी मूव टू द पेटेंट. अच्छा, पेटेंट, व्हाट इज पेटेंट? पेटेंट कहते हैं हम किसी भी इन्वेंशन को, इन्वेंशन ऑफ द माइंड. अब इन्वेंशन आर यूजुअली साइंटिफिक इन्वेंशंस. इन्वेंशंस में आपके पास मशीन्स भी आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, आपका लैपटॉप भी आता है, आपका मोबाइल भी आता है. एवरीथिंग कैन बी पेटेंटेड. अब पेटेंट राइट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स इन द टेक इंडस्ट्री. टेक इंडस्ट्री में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको वो किया जाता है, पेटेंट्स को वो लोग करते हैं. पेटेंट्स जो होती हैं आपकी इन्वेंशंस पर होती हैं. आप अपनी इन्वेंशंस को पेटेंट करा सकते हैं, आप अपनी एक सिस्टम को पेटेंट करा सकते हैं. अच्छा, अब मज़े की बात ये, जो हमारे मोबाइल का एक iOS होता है या सॉफ्टवेयर होता है, दैट कैन ऑल्सो बी पेटेंटेड. इवन द डिज़ाइन ऑफ योर मोबाइल और द इनसाइड ऑफ योर मोबाइल, दैट कैन ऑल्सो बी पेटेंटेड. पेटेंट राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, पेटेंट राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी आसान है बिकॉज इट इज़ योर राइट एंड यू कैन इवन सेल योर कॉपी राइट्स एज वेल एज द पेटेंट राइट्स. अच्छा, कॉपीराइट्स में मैं आपको बता दूं, आई मिस दैट आउट. कॉपीराइट्स में यू हैव द राइट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड यू हैव द राइट टू ट्रांसफर योर कॉपीराइट in lieu of any monetary compensation. या आप किसी भी तरीके, for example, I have written an artistic piece, whether it be a music, it be a composition, it be a book, it be a painting, anything, और मैं उसको sell out करना चाहता हूँ, तो I can give the copyright to any other person that you have the right to copy this thing,
but at this specific rate. Okay, so you have to like ask for the monetary compensation. इसी तरह पेटेंट में भी है. टेक इंडस्ट्रीज में क्या होता है? अच्छा, टेक इंडस्ट्री से पहले मैं आपको कार इंडस्ट्री की एग्जांपल दे दूं. जैसे कि हमारे पास ऑटोमोबाइल्स होती हैं, उसमें है कुछ ऐसी गाड़ियों के स्ट्रक्चर हैं. फॉर एग्जांपल द ऑल्टो एंड पीनो. ऑल्टो कम्स फ्रॉम द सुजुकी बैकग्राउंड एंड पीनो इज अनदर फॉर कंपनी बनाती है वो. द all of the structure of the car is same, बिल्कुल सेम टू सेम कार है, लेकिन ब्रांडिंग डिफरेंट है. So what Suzuki did, they sell their patent rights of that car to the Ford, and then Ford reproduce those patent rights. So those were sold out. तो आपके पास कॉपीराइट्स और पेटेंट में ये राइट होता है कि आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, एंड द ट्रेडमार्क कैन नॉट बी सोल्ड. अच्छा, पेटेंट में हमारे पास, अच्छा, पेटेंट इज रियली टेक्निकल. इवन यू कैन पेटेंट योर ओन डिजाइन. फॉर एग्जांपल एक बंदे ने अपना डिजाइन बनाया है, तो आप अपने डिजाइन को भी पेटेंट कर सकते हैं. अब यूजुअली ऐसा होता है कि एक इन्वेंटर होता है, एक साइंटिस्ट होता है, तो साइंटिस्ट के जहन में एक बात आती है, लेकिन साइंटिस्ट उसको वैसे बना नहीं सकता. वो ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं इंजीनियर को बोलेगा कि यार मुझे ये चीज़ बना के दो. तो वो जो डिज़ाइन है वो साइंटिस्ट पेटेंट कराता है, सो दैट इंजीनियर कैन नॉट इलीगली यूज़ दैट डिज़ाइन. तो हमारे पास ये भी एक पेटेंट में आता है. अच्छा, मैं आपको थोड़ा-सा यूएस की लॉ की तरफ भी लेकर जाता हूँ. अच्छा, पेटेंट और कॉपीराइट्स. कॉपीराइट्स का भी अपना ऑर्डिनेंस है, पेटेंट का भी अपना ऑर्डिनेंस है. पाकिस्तान में इन सब के लॉज एप्लीकेबल हैं. दिस ऑल गोज़ टू आईपीओ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. जिस तरह ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया जाता है, वैसे ही कॉपीराइट के भी अपने फॉर्म्स हैं, वैसे ही पेटेंट के भी अपने फॉर्म्स हैं, और उसी तरीके से उसको लेके चला जाता है. द फीस स्ट्रक्चर वराइज. तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर डूइंग, एंड देन ऑब्वियसली you can go and find the fee structure with the IPO personals. If you do not have access, like you are not in Peshawar, Islamabad, Karachi or Lahore, you can find someone, or you can go to the online website. तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं. लेकिन I would again suggest, if you are a lawyer, so you need to learn, and if you are a layman, so you need to understand that a counsel will save you from a lot of trouble and mess. Okay, so what happens in the US? If actually, जो सारी definitions है, these all comes from the US law. When I was studying in the courses from the University of Pennsylvania, तो there was this thing. They would classify these things and they would define it in different terms. अब पाकिस्तान में ट्रेडमार्क आपको इख्तियार देता है, राइट्स देता है. इसी तरह पेटेंट भी आपको राइट्स और इख्तियार देता है, और कॉपीराइट भी आपको राइट्स और इख्तियार देते हैं. अब इसमें एक और मजे की बात. पाकिस्तान इज द member of the convention. उस कन्वेंशन के तहत द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, पाकिस्तान इज अ मेंबर टू दैट कन्वेंशन. उस कन्वेंशन के तहत यू कैन रजिस्टर योर ट्रेडमार्क इन ओवर 100 कंट्रीज थ्रू यूजिंग द वीपो वेबसाइट. उसके लिए इट्स ओनली फॉर द ट्रेडमार्क राइट नाउ, इट्स नॉट फॉर पेटेंट और कॉपीराइट. उसके तहत what you can do is that first you have to register your trademark in Pakistan, and once registered you can then use the Vivo website, और वहाँ पे you can then go to the a Vivo website, and then you can register your trademark in over 100 countries, over 100 countries. So Pakistan से बैठी हुई भी, if you are a lawyer, you can register a trademark in any other jurisdiction. अच्छा, फीस स्ट्रक्चर वराइज. उसकी फीस मिलियंस में होती है, जो कि आपने नॉट इन मिलियंस बट इन Swiss francs, but those Swiss francs goes to like 6,000, 7,000 Swiss francs. So that changes to Pakistani around more than ₹1 million. It depends upon different jurisdictions, क्योंकि आपकी अपनी jurisdiction की fee होती है. So now coming to the questions, or everyone, if you want to ask further questions, you can ask, and I will answer the questions already available. Or फिर we will move to the fintech, as we have already uh, it's already 28 minutes gone. Okay, so let me see. अच्छा, व्हाट इज द फी ऑफ द ट्रेडमार्क? अच्छा, मैंने तो आपको एक दफ़ा पहले भी बता दिया कि द फी ऑफ द ट्रेडमार्क वराइज डिफरेंटली. आपका डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहें. सो टीएम फॉर्म जो होता है, TM1 फॉर्म, जिससे आप बेसिक अपना प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, दैट्स ओनली ₹3,000. एंड आफ्टरवर्ड्स जिस इस तरीके से अगर आप पे ऑब्जेक्शन लगती है, डिमांड नोटिस आता है, या यू हैव टू चेंज योर नेम या लोगो, या यू हैव टू चेंज योर काउंसिल, यू हैव टू चेंज योर एड्रेस, तो देयर आर अराउंड 50 प्लस फॉर्म्स. तो हर फॉर्म के साथ उसकी अपनी एक स्पेसिफिक फ़ी होती है, जो कि फिर हर फॉर्म के मुताबिक देकर दी जाती है. द फी स्ट्रक्चर इज़ अवेलेबल ऑन द आईपीओ वेबसाइट. ओके, ट्रेडमार्क और आईपी में क्या डिफरेंस है?
that I have already explained. Okay, if there is a close similarity between a trademark already registered and a new intended trademark, what would be the situation and what kind of test would be applied? अच्छा, अब इसमें close similarity है. The test, the threshold is that when you are registering a new trademark and this one trademark is already registered and you seem that there is some kind of similarity, तो उसमें आपने ये करना होता है. The threshold is that it does not create a doubt in the minds of a general public. ये threshold है. अब इस थ्रेशोल्ड को डिटरमिन करने का तरीका हर एक बंदे का डिफरेंट होता है. अब जो ए आर बैठा है, एडिशनल रजिस्ट्रार हु हैज़ द राइट टू डू दिस थिंग, उसका एक डिफरेंट तरीक़ेकार होगा. अब इसमें ये किया जाता है, ऐसे आई वाज डूइंग इट एंड मेरे भी कुछ ट्रेडमार्क्स में इसी तरह ऑब्जेक्शंस लगी. इस तरह था कि ऑल द देयर वर अराउंड 7-8 trademarks and every trademark had the word Peshawar in it. Lekin those trademarks were not related to each other because one was a school, the other one was a cricket team, the other one was a store. So in that case there was a difference. तो उस तरीके से we can justify the claim कि जनरल पब्लिक के माइंड में इसको देख के किसी भी किस्म का ख्याल या गलत शुबा नहीं आएगा कि it is somewhat similar to that thing. लेकिन if your trademark is closely aligned to an already registered trademark, then it is like 90% chances कि आपका वो trademark approve नहीं होगा. So that's the threshold. Okay, so Sakib said that Flash of Genius is one of the finest movie to understand patent law. Okay, that's really good. I can also watch that and kindly suggest any good course from Vipo. Okay, so Vipo is not currently offering any courses. It is basically a website. You can go to their website. You can subscribe their journals. So वहाँ से you can learn a lot, but they are not offering any courses. Although you can move to Coursera, and Coursera में you can find out good courses. वहाँ पर बहुत अच्छे courses available हैं. Apart from that, you can also move to LinkedIn Learning. तो वहाँ पर भी बहुत सारे हैं. U Academy है, Khan Academy है. These are the online websites which provides courses, and you have to pay some fee. Okay, what legislation deals with trademark, copyright, and patent in Pakistan? Okay, so I need to tell you exactly. So, what are the basically the years? So, let me tell you. I have all those in a trademark ordinance. Okay, so trademark ordinance is 2001. The copyright ordinance is, I guess, it's 1962, and the patent ordinance as well available. I just need to. Oh, okay. The patent audience is 2000. So these are the laws that deals with the IP in Pakistan. So this is all really, I would say, the the tip of the iceberg. Okay, so trademark is really an intrigued and intricate and really complicated kind of topic. And to understand and to determine that what falls in the trademark and what is a patent and what is a copyright, it requires your understanding of these three IPs ताकि आपको पता लगे कि what is it. अच्छा, we have another form of IP, वो भी आप सुन लें तो it's better. That's a trade secret. अच्छा, trade secret के लिए बहुत easy example. The taste of Coca-Cola, the flavor of KFC, the taste of McDonald's. इस तरीके से the designing of Polo. These are all trade secrets. ये trade secrets होती हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी. अब आप भी सोचते होंगे, मे बी मेरे भी जहन में आया कि केएफसी को आज तक कोई भी रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर सका. व्हाट इज द पॉइंट कि केएफसी पूरी दुनिया में है, लेकिन देयर इज नो अदर ब्रांड व्हिच कैन रिप्रोड्यूस द टेस्ट ऑफ केएफसी बिकॉज दैट इज देयर ट्रेड सीक्रेट. There is no other brand that can reproduce the taste of Pepsi or Coca-Cola because that is their trade secret. Whenever they hire someone, they tell them to sign an NDA, non-disclosure agreement. By the virtue of non-disclosure agreement, you cannot disclose any such thing. And if you disclose it, then obviously they do not allow you. They go to the courts, and then you can be obviously heavily fined. And obviously the competition commission of Pakistan also looks into all these things so that the fair competition goes. And these fines are not in thousands or lakhs or crores. These are usually in millions and billions. ठीक है, तो million is obviously 10 lakhs, लेकिन it's obviously above
10, 20, 30 lakhs, and it's usually in dollars. तो ये बड़े जो है ना बड़े बड़े heavy fines लगाते हैं if certain cases like these comes in on organization या from organizations which have such international standings जो कि इतने globally available होती हैं. Okay, so the logo of brand will also be under trademark law. Yes, exactly. The logo is also registered under the trademark law. अब ये आप पर है. If you want to register the logo and the name together, या आप उसको separately करना चाहते हैं, वो आप पर है. So that is important. आपको एक trademark ही करना चाहिए. Trademark के नीचे ही करना है. अच्छा, Choudhury Ubakar is asking, can a business owner file for a trademark without counsel? जी बिल्कुल, a business owner can file for a trademark, लेकिन again I told you that a counsel can save you from a lot of things. काउंसिल कैन सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ थिंग्स. अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि यू डू नॉट नो द टेक्निकलिटीज. एक काउंसिल को टेक्निकलिटीज का पता होता है. यू कैन गो टू द आईपीओ वेबसाइट एंड यू कैन फाइल इट आउट, लेकिन उल्टा if you want to save yourself from the council's fee या from the council all kind of डिफिकल्ट, मतलब होता है एक बंदे को एक काउंसिल के साथ डील करने में डिफिकल्टी होती है. सो उस सूरत में क्या होता है कि यू ट्रबल योर सेल्फ. आपका ट्रेडमार्क 2 सालों की बजाय 4 सालों पे चला जाता है बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कॉरिस्पॉन्ड इन दैट वे इन विच योर काउंसिल कॉरिस्पॉन्ड्स. और इसकी ऑब्वियसली 2 साल की कम्युनिकेशन है. यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट. मतलब रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क इज नॉट डिफिकल्ट, लेकिन कॉरिस्पॉन्डेंस एंड इसका जो फॉलो अप होता है दैट इज रियली रियली डिफिकल्ट. Adnan Khan is asking about the attendance form. So you will obviously get the attendance form. You do not need to worry about that. Okay, so I guess we are much more clear about the intellectual property and the 4 types of intellectual properties, along with the trade secret. And if anyone has any other question, I can give you a minute, and then we can move to the fintech part as well. I guess it was only advertised as intellectual property, but I will also tell you that how the financial technology is helping you and everyone around, and what is there for the councils in the fintech. Because I am currently working with one of the firms established in UAE who is dealing with a really good project. Yep. Okay, attends from Richard shortly. Okay. If there is any other question from any of the participant, you can ask whether if there is any personal question regarding the IP or is any other thing, we can surely ask in a minute. Then I will move forward to financial technology, the fintech. Okay, fine. So there are no other questions. Okay, so what is fintech? The words financial and technology are brought in together to call it as fintech. अच्छा, अब fintech में क्या होता है? The fintech law and everything. Currently, Pakistan has applied for, not applied for, but brought in an ordinance known as Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority, the POARA, which is a clear out copy of VARA. VARA is Dubai's Virtual Asset Regulatory Authority. UAE में जो UAE में नहीं, basically दुबई में जो authority काम करी है, that is called as VARA. Apart from that, European Union में MiCA काम कर रही है, that is Market in Crypto Assets, ठीक है. And US में है the Security Exchange Commission. यूके में एज सच अभी तक कोई भी लॉ बना नहीं है, तो अभी तक वहाँ भी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं आई. यूके यूएस आर क्वाइट बिहाइंड. अच्छा, Nawal Fatima, can you please share your email number so we can reach out that to you if you need any help regarding all of these in the future? Yeah, sure. Before ending the session, I will send it, or I can just write it down. You can obviously take that. Okay, just give me a minute so that I can write this thing, and then we can again move forward to. Okay, and that is gmail.com. Okay, my number and emails are shared in the
Chad, okay, said, let me answer the question. Do we need to register a trademark for online business? It's all your choice. If you are working on an online business, अच्छा basically यहाँ पर होता क्या है कि online business are not regulated directly right now. Online business falls in not in fintech, but that's another kind of thing. But if you register yourself, so it's all your choice. Like there is no need for that. The trademark is to protect yourself, ताकि no one can use your brand name. If you see that your business has the potential to grow and will become a brand, so that you register yourself, ताकि कल को कोई भी आपको कॉपी आउट ना कर सके, कोई भी आपके नेम को कॉपी ना कर सके, and you have the exclusive right to your name and logo. So that's the requirement. There is no burden or the need from the government side. Acha, okay, what are the piracy laws in Pakistan? अच्छा, पायरेसी लॉज आर डेल्ट विद कॉपीराइट लॉ. अच्छा, कॉपीराइट लॉ में क्या होता है कि कॉपीराइट लॉ कॉपीराइट लॉ में ये होता है कि जब भी ऑब्वियसली when it's a movie or a book or any other thing, it's get pirated to copyright के नीचे the person has the right to obviously find out the person. criminal proceedings भी चलाई जा सकती हैं, criminal proceedings का right भी है, और recovery का भी right है. So these are the piracy laws in Pakistan that is basically related to the copyright. Apart from that, I don't exactly know. जितना मुझे अंदाजा है, जितना मुझे पता है, there are only copyright laws that deals with the piracy. Okay, so we should move forward with the um, fintech. अच्छा, fintech. The fintech is the amalgamation of finance and technology. अब fintech में होता क्या है कि financial technology के तहत when the finances meets the technology, like currently we know easy paisa in Pakistan, we know jazz cash in Pakistan, we know the online banking applications working in Pakistan, but these are only working in Pakistan. ठीक है, अभी ये ऑफिशियल या ग्लोबल नहीं है, लेकिन ग्लोबली देयर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट वर्किंग एजेंसीज आप कह सकते हैं, या आप उनको कंपनीज कह सकते हैं, जो कि डील करती हैं विद द डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी. ठीक है, बैंकिंग आर सेंट्रलाइज सिस्टम. बैंकिंग्स में क्या होता है कि यू गो टू अ बैंक, यू पुट योर मनी इन द बैंक, एंड देन थ्रू बैंक इट्स ऑल ट्रांसफर्ड एंड अ रिकॉर्ड इज केप्ट एंड एवरीथिंग. लेकिन जितने भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल मैटर्स या जितनी भी अभी कंपनीज बनी हैं, दीज आर डिसेंट्रलाइज, क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर एक काम हो रहा है. डिसेंट्रलाइज इन अ सेंस दैट इट्स अ पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन, पी टू पी जिसको हम बोलते हैं. इसमें बैंक का या एक सेंटर जो होता है, एक बीच में जो बंदा होता है, जैसे कि बैंक इज एक्टिंग एज ए इंटरमीडियरी, वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं. तो अब फिनटेक को हम थोड़ा सा और भी डाइवर्सिफाई करते हैं क्रिप्टो करेंसी में. अब क्रिप्टो करेंसी क्या है? ह्यूमंस वांटेड टू क्रिएट समथिंग which is only available online but has no tangible asset behind it. So they created the cryptocurrency. अब cryptocurrency में कोई underlying asset तो है नहीं. These are just a coin, a virtual coin that is listed on an exchange, and through demand and supply process इसकी जो वैल्यू है वो सेंट से बढ़ के डॉलर्स में चली गई है. एंड अ सिंगल बिटकॉइन इज नाउ सेलिंग ऑन $120,000. अब इस बिटकॉइन को ट्रांसफर करने के लिए जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स यूज होते हैं, हम उन डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स को डील करने के लिए फिनटेक का नाम यूज करते हैं. और उसी फिनटेक को एज इट इज डिसेंट्रलाइज, तो उसको रेगुलेट करने के लिए वी ब्रिंग इन सम काइंड्स ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जैसे कि यूएई में वारा काम कर रही है, दुबई में दैट इज वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. अब एक वर्चुअल एसेट को बनाना, जिसको हम मिंटिंग या माइनिंग कहते हैं, दैट्स अ रियली डिफिकल्ट प्रोसेस एंड दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, नॉट मनी. एक एक बिटकॉइन को माइन करने में, या मिंट करने में, there are a lot of computers are using a lot of electrical power, और उस इलेक्ट्रिकल पावर से एक एक बिटकॉइन माइन होता है. अब इस बिटकॉइन का है क्या सीन? अब इस तरह होता है कि एवरी cryptocurrency या every virtual asset has an underlying white paper. That white paper is usually called as the blueprint of the
virtual asset. अब इस वाइट पेपर के साथ इस तरह होता है कि वाइट पेपर्स आर यूजुअली रिटन बाय द काउंसिल्स। वो वाइट पेपर उसको ब्लूप्रिंट बनाते हैं दैट क्लियरली शोज कि व्हाट दिस वर्चुअल एसेट इज। इस वर्चुअल एसेट्स को लेके कैसे चलना है, इसको एक्सचेंज पे कैसे डालना है, इसको सेल कैसे करना है, इसकी परचेज कैसे होगी, ये सारी चीज़ें उस वाइट पेपर के तहत की जाती है। The one who created Bitcoin, known as Satoshi Nakamoto, no one has ever seen him, no one knows who he is, no one knows his online presence, whether he is available, he is not. वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. We don't even know his existence or not. But he is the one who created this, and it is clearly told in the white paper that there will be 21 million bitcoins because that's the number. अब इस वर्चुअल एसेट्स को बनाया गया, अब इसको डील किया जाता है थ्रू द फिनटेक। फिनटेक में ये होता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स बनाए जाते हैं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स होते हैं जिसको हम DAO कहते हैं। दैट इज़ अ डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ नो लीडर। आपके सारे डिसीजंस एक कंप्यूटर के तहत किए जाते हैं एंड दैट कंप्यूटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट इज़ बीन फीडेड टू इट। एक कंप्यूटर अगर एक काम करता है सो दैट इज़ for perpetuity it is fed into a system and then उसी को बेस करते हुए it goes into another prompt। जिस तरीके से आजकल AI आया है, AI bots क्या करते हैं कि you give them a prompt and they give you the answer। now these prompts are fed in the AI। इस AI feed से होता क्या है कि ये सब कुछ जो मेन कंप्यूटर्स उसमें फीड होता जाता है एंड इट हेल्प्स द एआई टू improve in answering। You can see that 2 साल पहले चैट जीपीटी के आंसर्स बहुत डिफरेंट थे, 2 साल बाद उसके आंसर्स बहुत डिफरेंट है। यू जस्ट नीड टू गिव द प्रॉपर प्रॉम्प्ट। अब फिनटेक और वर्चुअल एसेट्स एंड एआई ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं, बहुत ज़्यादा इंटरमिंगल्ड हैं। ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा कनेक्टेड हो चुकी हैं कि देयर इज़ एन अंडरलाइंग नीड कि जब तक आप सबसे पहले इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको अंडरस्टैंड या फर्दर आप उसको समझ नहीं सकते। अच्छा, फिनटेक के बारे में भी तो आई टोल्ड यू कि व्हाट बेसिकली इज एंड ऑल एंड अगर हम इसके बहुत ज़्यादा इसको हम और भी ज़्यादा लेकर चलेंगे इट विल गेट रियली 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 it is going to be really 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 difficult and it's going to be really lengthy. So I guess this is more than enough for now. And if anyone has any question regarding fintech, regarding the IPs, so I'm available. You can ask in the next 5 minutes. You can tell me about your questions, and if any other thing is required, my official email is there. You can also ask that. Your attendance forms are also shared. So we have like 5 more minutes. If anyone need to ask any question, you can ask me here. You can contact on the emails. If you need any assistance, you can also get that from there. I guess no one has any other question, so we can wrap up in 2 minutes. And I guess I was able to explain. Maybe I'm not. I was not that. Maybe you people आपको मैंने ज़्यादा समझाया ना हो, लेकिन still जहाँ तक समझा सकता था, so I tried my best. Still, if you have any questions, if you have anything, you can leave a review as well. If there was anything missing, so you can obviously tell me. Perfect. So I'm going to end the stream and inshallah meet you soon. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz.
Thank you so much, Zahir Ahmed. Thank you. Allah Hafiz, everyone.